સંવિધાન દિવસ પર કેન્દ્રીય કાનૂન મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલ ભારતીય સંવિધાનના મહત્વને હાઇલાઇટ કર્યું। સુપ્રીમ કોર્ટમાં યોજાયેલી સંવિધાન દિવસની ઉજવણી દરમિયાન કેન્દ્રીય કાનૂન મંત્રી અર્જુન રામ મેઘવાલે ભારતીય સંવિધાનની દ્વિગણ ભૂમિકા પર ભાર મૂકતા એક ભાવુક ભાષણ આપ્યું, જેમાં નાગરિકોને મૂળભૂત અધિકારો આપવાની અને ફરજ ભાવના જગાવવાની વાત કરવામાં આવી। મેઘવાલે વિવિધતાથી ભરેલા દેશની એકતા અને અખંડિતતાને જાળવવા માટે સંવિધાનની કડક સ્થિતિ અને લોકોની આશાઓને પૂર્ણ કરવાની પ્રતિબદ્ધતામાં તેની લવચિકતાને હાઇલાઇટ કરી। મેઘવાલે ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકર અને ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના અન્ય સભ્યોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, તેમના દસ્તાવેજને બનાવવામાં કરેલા મહાન પ્રયાસોને માન્યતા આપી, જે દેશને માર્ગદર્શન આપવાનું ચાલુ રાખે છે। આ સંવિધાન અમારો માર્ગદર્શક પ્રકાશ છે, તેમ તેમણે જણાવ્યું, જે ભારતના લોકશાહી માળખાને આકાર આપવામાં તેના મહત્વને રેખાંકિત કરે છે। મંત્રીએ અધિકારો અને ફરજો વચ્ચેના સંતુલનમાં સંવિધાનની ભૂમિકા પર વિસ્તૃત વાત કરી અને ખાતરી આપી કે નાગરિકો તેમના સ્વતંત્રતાનો આનંદ માણે છે, તે સાથે તેઓ દેશની એકતા અને અખંડિતતામાં પણ યોગદાન આપે છે। તેમણે સંવિધાનની અનુકૂલન ક્ષમતા માટે પ્રશંસા કરી, જે દેશની બદલાતી જરૂરિયાતો અને આશાઓ સાથે વિકસિત થવાની મંજૂરી આપે છે। મેઘવાલના ભાષણમાં સંવિધાનના ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો, જેમાં સંવિધાન સભામાં થયેલી વ્યાપક ચર્ચાઓને યાદ કરવામાં આવી। તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે સંવિધાન માત્ર કાનૂની દસ્તાવેજ નથી, પરંતુ એક જીવંત સત્તા છે, જે યુગની ભાવના અને લોકોની આશાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે। આ કાર્યક્રમમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સંજીવ ખન્ના અને ન્યાયપાલિકા તથા સરકારના અન્ય પ્રખ્યાત સભ્યો સહિત અનેક મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા। આ ઉજવણી ભારતીય સંવિધાનના સ્વીકારના 75મા વર્ષગાંઠને ચિહ્નિત કરતી હતી, જેની ઉજવણી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને ભાષણો સાથે કરવામાં આવી હતી, જેના સતત મહત્વને હાઇલાઇટ કરવામાં આવ્યું। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय व मौलिक अधिकार देने का प्रावधान करता है, वहीं दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार को सुशासन का मार्ग भी प्रशस्त करता है। संविधान एक ओर जहां नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों का कर्तव्य बोध भी करवाता है और केंद्र राज्यों के मध्य आपसी समन्वय व नीतिगत विषयों का क्लियर विभाजन भी करता है। वहीं दूसरी ओर थर्ड टायर गवर्नेंस के माध्यम से ग्रास रूट पर सुशासन की राह दिखाता भी है। विविधताओं से भरे देश की एकता व अखंडता को लेकर संविधान कठोर भी है, वहीं राष्ट्र की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता के साथ लचीला भी है। भारत के संविधान के द्वारा शासन के तीनों ऑर्गन्स विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के मध्य दायित्वों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तीनों के समन्वय का ही परिणाम है कि भारत का लोकतंत्र समय के साथ और मजबूत और परिपक्व होकर प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। संविधान के कस्टोडियन माननीय सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित इस समारोह में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि संविधान सभा में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज से इलेक्ट 292 सदस्यों, रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में 93 सदस्यों व चीफ कमिश्नर प्रोविंस के प्रतिनिधियों के रूप में 4 सदस्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। इस अवसर पर मैं इन सभी सदस्यों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्यों, विशेषकर मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली 15 महिला सदस्यों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और राष्ट्र निर्माण के महान कार्य में जुटे सभी सदस्यों की दूरदर्शिता को ध्यान में रखकर बेहतर भविष्य की प्रेरणा लेते हुए चिंतन, मनन, मंथन करने का आह्वान करता हूं। सार रूप में कहा जाए तो भारत का ये पवित्र दस्तावेज हमारे लिए गाइडिंग लाइट है। ये भारत की हजारों वर्षों की अखंड परंपरा को समाहित किए सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्निहित कलेक्टिव विजडम की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज ए व्हीकल ऑफ द लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। आज के 75 वर्ष पूर्व कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन की पूर्व संध्या
अर्थात 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें सावधान किया था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसी विरोधाभास से भरी अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत पर राजनीतिक समानता हमें प्राप्त हो जाएगी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। संवैधानिक मूल्यों के सच्चे संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला व युवाओं को केंद्र में रखकर जन कल्याणकारी योजनाओं के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से आर्थिक सामाजिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि 2013-14 से 2022-23 के बीच में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।